সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কসের নাম কে না জানেন, কিন্তু আরেক কার্ল মার্কস যে তামিলনাড়ুর একটি প্রত্যন্ত গ্রামে কৃষিকাজ করছেন সেটা কি জানতেন? আইকনিক বিপ্লবী চে গুয়েভারা সেখানে করছেন দিনমজুরের কাজ, কিন্তু কিভাবে? চলুন শুনি ভান্নি ভেলামপট্টি গ্রামের গল্প। என் பேர் வந்து கார்ல் மார்க்ஸ். என் பேர் ஏங்கல்ஸ். வெஞ்சிலாக்குட்டி আরমা। দক্ষিণ ভারতের এই গ্রামে আপনি একজন ফিদেল কাস্ত্রো এবং চে গুয়েভারারও দেখা পেতে পারেন। ভান্নি ভেলামপট্টির মানুষ কয়েক প্রজন্ম ধরে কমিউনিস্ট হিসেবে গর্বিত। நாங்கள் வந்து கம்யூனிஸ்ட் குடும்பம். அதுவாச்சு வந்து எங்கள் அப்பா வந்து அவர் என்னுடைய கார்ல் மார்க்ஸோட ஞாபகார்த்தமாக வந்து என் பேரை வந்து கார்ல் மார்க்ஸ்னு வச்சுருக்காங்க। 1968 সালে কিরভেনমণি হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ভেম্বুলি নামের এক ব্যক্তি। ধর্মঘট করার জন্য সেখানে 44 জন দলিত কৃষক শ্রমিককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এরপরই এই গ্রামে কমিউনিস্ট মতাদর্শ নিয়ে আসেন তিনি। গ্রামে ফিরে ভেম্বুলি নিজের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ভূমি সংস্কার ও জাতিভেদ প্রথা নির্মূলে এক ধরনের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রামবাসীকে সংগঠিত করেন। তবে নানা দেশে কমিউনিস্ট দেশগুলোর স্বৈরাচারী নেতাদের দমনপীড়ন ও সহিংসতা থেকে এই মতাদর্শ অনেকটাই আলাদা ছিল। অনেকে এইসব বিষয়ে জানেনও না। স্থানীয়দের মতে সাম্যবাদী আদর্শ এখন গ্রামটিতে গভীরভাবে শেকড় গেড়েছে এবং সেখানে জাতিভেদ প্রথার আর কোনো ভূমিকাই নেই। எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து நாங்கள் கட்சியில் இருக்கோம், அதனால் அழியக்கூடாதுன்னு நாங்கள் அருவா சின்னத்தை வரைஞ்சி வச்சுருக்கோம்। இந்த கட்சியில் நாங்கள் உயிர் போனாலும் இந்த கட்சியில் இருப்பான், என் பேரை பற்றியை சொல்லிட்டு தான் যাবো। এই গ্রামে আরেকটি জনপ্রিয় প্রথা বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতাদের নামে সন্তানদের নামকরণ। নাগাজ্যোতি তার মেয়েদেরও এই প্রথার অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাদের নাম মার্কসিনা এবং লেনিনা।